its element. See my dear carefully. First of all, अगर मैं बात करूं, मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए बराबर। अगर मैं बात करूं जैसा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। थोड़ा स्टॉप कर दे। तो तुझा अंदाज कैसे करना है? हाँ। इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू अगर हम डिस्टेंस को देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस क्वांटिटी है वो लेंथ है, क्या है? और लेंथ क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होती है? और टाइम क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये जो स्पीड है ना, ये स्पीड दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है। तो डिस्टेंस इज इन मीटर, एंड टाइम इज इन सेकंड, दैट इज व्हाई इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। So this is the first derived quantity, and this is the derived quantity, and this is the derived unit. Second is that velocity. Velocity is equal to displacement upon time. Displacement upon time. Displacement also मीटर, क्या है? मीटर। टाइम क्या है? सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। और getting this one my dear. Another is that acceleration change in velocity upon time, and we know that velocity is equal to displacement upon time, and already मेरे पास एक टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। टाइम इनटू टाइम स्क्वायर, बोले तो सेकंड स्क्वायर। तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द डिराइव्ड यूनिट एंड दिस इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। एक्सेलरेशन की बात होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो माय डियर, मास इज द किलोग्राम, मास इज द किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज द मीटर पर सेकंड square. That is a kilogram per meter square is nothing but the Newton. Why it is given as a Newton? Why it is given as a Newton? Because it is discovered by the Sir Isaac Newton. That is why force unit is a Newton, and Newton is the derived unit. After that, pressure is equal to force upon area. Force is a Newton. Area is the meter square. So its unit is that Newton per meter square. And it is discovered by the Sir Pascal. That is why it is also called as the Pa means Pascal. Pressure. Okay, now see. Work is equal to force multiplied by displacement. Force is the Newton. Displacement is a meter. So it is a Newton meter, and it is also the joule. Work. That is impulse. Impulse is equal to force multiplied by time. Force is a Newton. T is the second, Newton second. क्या होगा ये? Newton second. After that, momentum. क्या बेटा? Momentum क्या होता है? Mass into velocity. तो mass is the kilogram, and what is the velocity? Meter per second. What is the velocity? Meter per second. क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। After that, kinetic energy 1/2 mv², और kinetic energy का होता है जूल। क्या होता है? जूल। जैसा मास का लिख दो, वेलोसिटी का लिख दो। मास का क्या होगा? किलोग्राम। वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। That is a joule. Are you getting this one, my dear? Are you getting? That is the speed, velocity, acceleration, force, pressure, work, impulse, momentum. Means these all quantities, this work, this impulse, this momentum, this pressure, this force, this acceleration, this velocity, and this speed. These all are the derived quantities.
Why it is a derived quantity? Because it is depend on the other two or more fundamental quantity for their measurement. For their measurement. म्हणजे ह्या जेवढ्या पण क्वांटिटी आहे हा प्रत्येक क्वांटिटी कोणावर डिपेंड आहे? फंडामेंटल. कशासाठी? मेजरमेंटसाठी. कशासाठी? मेजरमेंट. म्हणून याला काय म्हणतो आपण? derived. काय म्हणतो? derived क्वांटिटी. इथे जो फोर्स आहे हा फोर्स जो आहे ना बेटा हा न्यूटनने डिस्क्राइब केला होता. कोणी केला होता? न्यूटन. म्हणून इथं जसं न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर आहे त्याला सॉरी फोर्स का न्यूटन क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये है न्यूटन. क्या है? न्यूटन क्यों आया? बिकॉज न्यूटन ने डिस्कवर प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का क्या होता है? न्यूटन. एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ पा. पा means pascal. पा means pascal. After that work is equal to force multiplied by displacement. Work is equal to force multiplied by force is a newton. Displacement is a meter. Displacement is a meter. So Newton meter that is joule. Impulse force multiplied by time. Force multiplied by time. Force is the Newton. Time is second. Newton second. Newton second. Momentum mass into velocity. Mass into velocity. Mass is a kilogram. Velocity is a meter per second. Meter per second. Meter per second. Are you getting this one? These all are the derived quantity. These all are the derived quantity. Are you getting this one, my dear? Stop.